Bismillahirrahmanirrahim，大家好，我叫Shahid。今天我们将学习用汉语写一个句子，并了解它的意思。你们准备好了吗？我们开始吧。आज हम चीनी जबान में एक जुमला लिखना और उसके मानी को समझना सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? आए शुरू करें। 句子是 The sentence is जुमला है Can you hug me? Can you hug me? So how are you going to write that in Chinese characters? Just pay attention, it's very easy. This is how we write it.你能抱抱我吗？你能抱抱我吗？你能抱抱我吗？你能抱抱我吗？ Can you hug me? Can you hug me? क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? Can you hug me? Okay. So this is the sentence which I was talking about. 你能抱抱我吗？你 means you. 能 means can. 抱抱 means to hug, to embrace. Gale lagana. 我 means I. Ma is a particle used in Chinese language to make a sentence interrogative. So this is the whole sentence in front of you. I have showed you that how we are going to write this sentence stroke by stroke in a proper order, because stroke order is very important to be learned in Chinese language in order to write a Chinese character. अगर आपको चीनी ज़बान में लिखना है, आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप लिखना चाहते हैं चीनी ज़बान में, तो आपको ये जो जैसे मैंने लिखा, आपने हर एक स्ट्रोक को जो इसका जुज है लिखने का, जैसे कि मैंने ये लिखा पहले, फिर उसके बाद ये लिखा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये दोनों, तो इनके लिखने का जो तरीका, इसको स्ट्रोक ऑर्डर कहते हैं। स्ट्रोक ऑर्डर, ये मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रोक ऑर्डर, ये आपने मेंटेन रखना है. You have to maintain this order in order to write a proper Chinese character. So this was the sentence. Ni means तुम, नंग कर सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो. बाओ बाओ, बाओ बाओ means गले लगाना. वो मुझे, माँ ये लफ्ज़ मैं बार बार इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि जब ये जुमले के आखिर में आ जाए तो जुमले को सवालिया बना देता है. सो ये सवाल पूछ रहा है, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? कैन यू हग मी? नी मीन्स यू, नंग मीन्स कैन, बाओ बाओ इज इट पॉसिबल. ओके, इज द पर्सन इज आस्किंग for the permission of the other person, that will he be able to hug the person who is asking the question. So ni nang, can you bao bao hug or me? Ma, here this wa is playing the role of me. So can you hug me? And this is the particle. I have explained it a lot and very frequently, and this is used a lot in Chinese sentences.
So this was all about today's sentence. I hope you would have learned something new today. And writing is a very important thing. A lot of people struggle in writing. So these videos will provide you that aid, that help that you would need for writing your Chinese characters. So we will see and meet each other in next video lecture. And this is all for today. See you in next lecture. 再见. अगले लेक्चर में हम मिलते हैं. तब तक के लिए खुदा हाफिज. 再见.